सो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और सर हाँ बोलो सर ट्रांसफॉर्मेशन में ये चेक करते हैं ना कि फेज वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए इफ योर या सिस्टम इज कॉबियन वन रख। इफ योर सिस्टम इज कंजर्वेटिव, राइट सर। है ना। इफ योर सिस्टम सर इज नॉट इफ योर सिस्टम इज नॉट कंजर्वेटिव तो अपने आप में फेज वॉल्यूम चेंज होता है विद द सर टाइम। मैट्रिक्स में जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट ये होता है हम्म कि कोई भी एक स्क्वायर का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा लेकिन एरिया नहीं चेंज होता है। तो वहां ऑब्वियसली। विजुलाइज करना इजी था, हम्म लेकिन फेज स्पेस में समझ नहीं आ रहा है कैसे विजुलाइज करूँ। नहीं विजुलाइज कर सकते ना, बिकॉज इट इज 6 डायमेंशनल थिंग। एवरीथिंग कैन नॉट बी विजुलाइज्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर एक चीज आप यस। विजुलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम करेंगे, अभी तो नहीं, बिल्कुल लास्ट जब आपका कोर्स होगा तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फेज वॉल्यूम फेज एरिया चेंज होता है और उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो देख देख ओके सर। पाएंगे, है ना। सो आई हैव 1 or 2 प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस दैट थिंग। ओके, सो एवरीथिंग यू कैन नॉट विजुलाइज, ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम हर चीज को विजुलाइज करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू विजुलाइज दैट थिंग, you should visualize it mathematically at the higher level. Are you getting my point? है ना। यस। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। Anyway, चलो, so let's go for some basic problems. So first problem is very simple. What we have basically two transformation, and this transformation is q is equal to q cos alpha minus p sin alpha, and this capital P is equal to q sin alpha minus p cos alpha. Okay, so this is one type of transformation. We should check whether this transformation is canonical or not. Very simple. What you can do, you have to just go for del q upon del q, del p upon del p minus del q upon del p into del p upon del q. So this is your Poisson bracket between q and p. So this is your Poisson bracket between q and p, and we have to just check it. So del q upon del q is cos alpha. Del p upon del p is what is, sorry, this will be plus sign. Just check it. Let me check this particular thing. This will be plus sign. इसको plus कर लेना. So del p upon del p is what? Again cos alpha. Minus del q upon del p is del minus q alpha. minus sin alpha. Very good. Minus sin alpha. Del p upon del q is sin alpha. It's a very simple thing. So what you have? You have cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. So yes, for here, this q and p is equal to 1. So what is the meaning of that? Meaning of that, it is canonically transformed. Now, which type of transformation is this? We can visualize this type of transformation. कैसा transformation है? Can you please tell me? किस तरह का transformation हो सकता है ये? So rotation. Rotational transformation with some angle alpha, है ना? So we can have initially q and p. Let's say this is my q, this is my p, and we can just go for next transformation is something like capital Q and capital P. So we can have this sort of transformation. So the rotational transformation, after keeping its arrow, keeping its origin at coinciding at the same point. So this type of transformation, maybe this is this type of transformation, and yes, this transformation is canonical in nature. Okay, this is so simple that I can make it. But look at the next problem. And when you will go for the next problem, then it is very difficult me to explain which type of transformation is this. Look at next problem. यहाँ तो clear है ना? It's a very simple. Yes, sir. Okay. So let's go for next problem. So what we have basically. Sir. हाँ बोलो.
सर ये रोटेशनल को हम बता रहे, रोटेशनल को हम बोल रहे हैं ये कॉस अल्फा साइन अल्फा को देखकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉस अल्फा साइन अल्फा को देखकर। कुछ ऐसा हम लोगों ने पहले कर रखा है इसलिए बता पा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, जैसे कि अगर तुम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, पूरी चीज को अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे पी एंड क्यू, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड दिस विल बी क्यू एंड पी, है ना। You can write something like this. So what will be this matrix? This matrix is something called rotational matrix, isn't it? With angle alpha. है सर। है ना। So ऐसा हम पहले देख चुके हैं इसलिए बता पा रहे हैं। Are you getting my point? But every time if you will ask me that सर इसके भी जरा एक्सप्लेन कर दो ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट को करने की कोशिश करते हैं। ओके सो एंड वी आर जस्ट सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम फ्रॉम गोल्डस्टीन, है ना, सब सारे हम गोल्डस्टीन के अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं। सो इससे बाहर कहीं जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। सो Q इज इक्वल टू log 1 by Q sin P, and similarly P is equal to Q cot P. Now this is your transformation, and we just want to see whether this transformation is canonical or not. So we just want to see how this transformation behaving. So we have to just check what will happen to this particular Poisson bracket. So what do you have to do? You have to, again, I am just using this thing. Okay, so del Q upon del Q is equal to, now it is log, so you have 1 upon Q sin P, and we have to differentiate with respect to Q, then sin P will be constant and minus 1 upon Q square is there. ठीक क्या हो ना, कैलकुलेशन आप देखते जाओगे, and del P upon del P, what will happen? We are using this minus का formula. cube cosec square p. So this will be minus Q cosec square P. Next, minus sign del Q upon del P. Again we have to go for 1 upon Q sin P, and we have to just write 1 upon Q cos P, है ना, and then del P upon del Q. This is del P upon del Q. So what will be this value? This value is cot P. So now you can see कुछ cancel हो रहा है, this minus is plus, so this will be cancel out, ये सारा cancel कर देगा एक दूसरे को, sin P is going to cancel out, so we have cosec square P minus, and this will be 1Q is cancel, cot square P, so cos by sin is cot, and this value is 1. So yes, this is also canonical transformation. है ना, दिस इज ऑल्सो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब नाउ, अब आप जरा इसको चाहो तो जरा कैसे एक्सप्लेन करोगे कि सर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे पिछले बार वाले को तो बता दिया था, ओके दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट अ रोटेशनल वन, क्या इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं? No sir. सर एक्सपोनेंशियल टाइप है वैसे तो। अब क्या है, किस तरह से आप इसको देख सकते हो, इट विल वेरी टफ। ऑब्वियसली लॉग है तो एक्सपोनेंशियल जैसा आप कह ही सकते हो। सो दिस इज log 1 by Q sin P, ऐसा कहीं देखा है क्या इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन? अगर आप पहले देखे हुए होते तो फिर आप बात कर सकते थे, ठीक है, बट यस इट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड मे बी सम प्लेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन डू मिरेकल। ओके, कैसे मिरेकल करेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, जब हम लोग जनरेटिंग फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो, बट बिफोर दैट वी कैन जस्ट डू इट मैकेनिकल। ओके,
So let's go for next problem. Okay, so let's go for this one. So this type of problem can easily come into your exam, and this is favorite question for every exam. For q is equal to q to the power alpha cos beta p, and p is equal to again q to the power alpha sine beta p. So what we have to do, we have to find the value of alpha and beta. We have to find the value of alpha and beta such that this transformation is canonical in nature. So now here it is given that this transformation is canonical. So we have to know that, okay, this transformation is canonical, and we have to go for condition on the alpha and beta such that it will follow Canonical. the canonical rule. Okay, so obviously we have to just go for capital Q, capital P, and then we must go for del Q upon del Q, del P upon del P, minus del Q upon del P into del P upon del Q. And this must be 1 because we know this is canonical transformation. So now we have to just go for this particular calculation. So what we have? Alpha Q alpha minus 1 cos beta P and del P upon del P. So we have Q alpha and beta will come outside because we have to differentiate sign, and this will have cos beta P. Okay, minus del Q upon del P. So again we have to go for this calculation, del Q upon del P. So you have Q alpha, and this will have minus sine beta P, del P upon del Q. Then you have alpha Q alpha minus 1, and we have sine beta P. And alpha what is we 1 have? by 2, beta is 2. Okay, ठीक है, उसमें कुछ फर्स्ट टर्म में सर cos का डिफरेंशिएशन नहीं होगा फर्स्ट टर्म में यहाँ पर सर यहाँ क्यों करोगे? बिकॉज यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू ओनली ना. ओके सर ओके ओके ओके, साइन हाँ ठीक है. ओके, so what will happen? So we can just take something common, alpha q, and this will be 2 alpha minus 1 and beta. This thing we can take common, isn't it? And inside bracket we have cos square beta p plus sine square beta p must be equal to 1. So what will happen? This term is 1, and now we have alpha beta q to the power 2 alpha minus 1 is equal to 1. Now we have to calculate two variable, alpha and beta. So we need two equation. So we have to search where is this two equation. Obviously, this is very simple. Hence it is 1. It is just number. Then I can claim the power of q should be 0. So we can claim 2 alpha minus 1 must be equal to 0. So from here, I have alpha is equal to 1 by 2. And now, once alpha, and if the power of q is 0, then we have alpha beta must be equal to 1. I get alpha is equal to half. Then we can write beta is equal to 2. So alpha is equal to half and beta is equal to 2. At least in every examination this question I have asked.
एक बार नेट में भी आ चुका है, एक बार जेस्ट में भी आ चुका है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, नथिंग टू डू दिस। एंड बेस्ट पार्ट इज दैट इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है प्रॉब्लम में, ओके, बिकॉज इफ यू वांट टू गिव द आर्बिट्री फंक्शन, it is not going to work. Only some certain type of relationship have to be worked, because you have two variable, two unknown variable and two known variable, isn't it? So this type of thing is there. So you should always just and one most important thing you can see, आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जरूर आ रही है, isn't it? cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1, या cosec square alpha minus cot square alpha is और p is equal to 1, इस तरह से कुछ कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जरूर आपके पास आ रही है कैलकुलेशन करने के बाद, है ना? चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। So one thing I want to ask, sir. So how you means q to the power 2 alpha minus 1 equals to 0 means this point I'm not able to कंपेयर understand. कर ले दोनों साइड यार। हाँ एक मिनट, वो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब हमें कोई चीज समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है, जब चीजें नहीं समझ में आता है तो दूसरे के लिए टफ होता है, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम, ओके, ठीक है? सो इतना कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम हमारे पास एनफ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है आलोक, है ना? यस है ना? तो आराम से, है ना? देखो अल्फा इंटू बीटा क्यू टू द पावर 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है? देखो ये तो नंबर है ना, ये नंबर होने का क्या मतलब है? दिस Yes, शुड बी sir. इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, Yes, sir. है ना? और इस साइड क्यू का पावर क्या है? जैसा आलोक बोल रहा था कि पावर कंपेयर कर लो, इस साइड क्यू का पावर क्या है बताओ? 0 है सर। 0 है, सो 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ओके सर, है ओके ना? सर, फिर आगे कर ओके, थैंक यू सर। म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम, फिर देखते हैं अगर टाइम होगा तो आगे मूव कर पाएंगे, ठीक है? सो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। ओके, सो लेट अस गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम। ये भी आपके एग्जाम में ही आ चुका है, सो आई एम जस्ट टेकिंग योर एग्जाम क्वेश्चन, सो लेट्स गो फॉर दिस। Q इज इक्वल टू रूट अंडर 2 रूट Q e to the power minus 1 plus 2 alpha and cos p, okay, and p is equal to, you have root under 2q and we have again e to the power minus alpha minus 1 sin p, okay. So this is our transformation. What we have to do, we have to calculate the value of alpha, we have to calculate the value of alpha such that the transformation is canonical. चलिए 30 सेकंड में करके दिखाइए एवरीवन, इसके बाद में करूंगा। So we have to just go for del q upon del q and del p upon del p minus del q upon del p upon del q. This must be equal to 1. So del q upon del q. So what you have? You have root 2 is there, and this will be what? 1 upon root q na, and
1 upon half is also there, isn't it? Yes, sir. 1/2. 1 upon 2 is also there. And e to the power minus plus 2 alpha. Okay. And we have cos p. Okay. Del p upon del p. So what will be this value? This value is 2 root q e to 2 the आएगा. power minus, very good. So minus alpha minus 1. है ना? And this will value is what? Again cos p. Okay. कैलकुलेशन बहुत आराम से करना है क्योंकि कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ न हो जाए. Del q upon del p. So what this value? So this value is root 2q e to the power minus 1 plus 2 alpha, and cos p is equal to what? Minus sin p. And again we have to go for next one. So what we have? We have again root 2 is there, 1 upon root q is there, and half is there, and we have e to the power minus alpha minus 1 sin p. So it's a very clumsy kind of thing. कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Yes. क्या क्या कैंसिल हो रहा है? रूट 2 क्यू हो रहा है. Root Root 2 2q हट जाए. root 2q हट जा रहा है. This is very, ये भी हट जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so वो भी हट जा रहा है. यहाँ से भी हट जा रहा होगा फिर तो, है ना? Yes, sir. Yes sir. So ये Yes, sir. सारा कैंसिल हो रहा है. और फिर आपका कुछ कॉमन चीज बाहर आ जा रहा है. Yes, sir. Star exponential. Okay, e to the power minus 1 plus 2 alpha as well as e to the power minus alpha minus 1, और अंदर फिर से वही देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मिल रही है, cos स्क्वायर p plus sin स्क्वायर p is equal to 1. So again this value, so this is your Jacobian, this is your transformation of Jacobian, but ये value क्या आ रहा है? e to the power minus 2 Plus alpha. plus alpha must be equal to 1. और ये 1 कब होगा? जब ये वैल्यू अल्फा minus 2 is equal to 0. That means alpha is equal to 2. And you will surprise that these all questions are for 5 marks. है ना? So you have to just keep patience and you have to just do practice on this type of problems. ठीक है? So we will just do all this problem. Different exam में जो भी problem आप करोगे, mechanical है, so there is not any problem. But thing is that how we can write this type of canonical transformation? From where it can be generated? This is very important question. Because this is not arbitrary function. ऐसा नहीं कि कोई भी function लेकर के दे दिया. Obviously, then there is maximum chance that all these function will be basically non-canonical. But वैसा specific function चाहिए हमें जो कि हमें canonical transformation देगा. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा what is the generating function. So the next class I will just go for generating function, है ना? आज शुरू करने से कोई खास मजा आएगा नहीं. So what is generating function? This is one type of function which will give you the canonical transformation, and this will also give you that how you can transform the Hamiltonian to old coordinate system to new coordinate system. Are you getting my point? यहां हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे दिस इज रियल बिग थिंग. जैसे लैग्रेंजियन में क्या था? लैग्रेंजियन में हमारे पास था x y z. हमने x को लिखा, y को लिखा, z को लिखा और डायरेक्टली लिख देते थे. नाउ लैग्रेंजियन कैन बी फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, और r डॉट थीटा डॉट फाई डॉट सबको यूज करके हम लिख देते थे. यार इट कैन बी फंक्शन ऑफ x डॉट y डॉट z डॉट. Here it will be also function of r dot theta dot phi dot. Now sometime mainly in the Hamiltonian case we have function which we have transformation which may be function of time. Are you getting my point? Which may be function of time, and your generating function which will give you the canonical transformation may be function of time. Then you cannot directly apply all these things.
then this time part will play very important role. So इसके बारे में हम बात करेंगे next class में. Next class will be the mainly next class, and after one class we have the final level of formulation part. Okay, so next class हम लोग बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन के लिए. अभी तक कुछ और पूछना हो तो बात कर सकते हो. सर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका यूज क्यों करते हैं सर हम? जैसे जैकोबियन 1 कर दिया तो उसका हाँ, मतलब that is the simplest transformation you can do where Jacobian is 1. Yes, इससे sir. सिंपल क्या हो सकता है? हाँ सर. है ना. तो पहले मतलब- सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का तो देख लो, उससे क्या क्या फायदा हो सकता है. ओके सर. है ना. फर्स्ट वी आर जस्ट want to learn that how we can use the simplest transformation. There is also the case where Jacobian is not equal to 1, which is known as extended canonical transformation. So अच्छा. that is not the part of our syllabus. Okay, but here we are just talking about if we have the simplest transformation where Jacobian is equal to 1. That is हाँ, that is the most simple transformation. Simplest case. Yes, है ना? sir. So if हाँ, we sir. have this type of case, even if this is simplest, this may make your life very simple. Okay, Yes, sir. जैसे मैंने कि कल की क्लास में ही कहा था, या फिर आज फिर से दोहरा रहा हूं, इसको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन भी करूंगा. Suppose you have the simplest form of harmonic oscillator, isn't it? Oh, sir. Yes, sir. P square upon 2m plus q square or half m omega square q square. So, okay, this is simple transformation. This is simple Hamiltonian, not very tough. Only second order differential equation is that. But we can make it more simpler than this Hamiltonian, where Yes, you sir. can find something is constant. Yes, sir. है ना? You can find something is constant. And then we can talk all about this thing. है ना? वो क्या constant हो सकता है? कहां से प्लैंक्स कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हुआ होगा क्वांटम मैकेनिक्स में. ऑल दिस थिंग आर रिलेटेड टू द this particular canonical transformation and different type of generating function and outcome of that generating function as a canonical transformation. ठीक है. अभी हमने एप्लीकेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. We have just checked whether transformation is canonical or not canonical. Okay. Yes, sir. Okay, now Yes, sir. next class से हम लोग उसके एप्लीकेशन भी करके देखेंगे कि if we have suitable canonical transformation, then is that it is making our life simple, easy or tough. Okay, Yes, sir. हाँ, तो ये हम करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. सर हाँ, आप बोलो. टाइम के बारे में एक बात बोला है, वो समझे नहीं. टाइम के बारे में ये बात मैं कह रहा हूं कि सम टाइम मे बी योर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैव अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उस समय आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो इस तरह. यू नीड सम डिफरेंट फॉर्मुलेशन. कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सब कर लेंगे. है ना? सर पिछले दिन में आप एक प्रॉब्लम किया है, वो यू क्वांटिटी को तुमने आइडेंटिफाई किया व्हाट इज दैट यू क्वांटिटी? नो सर, आई एम ट्राइड बट नॉट. बट ट्राई करो आइडेंटिफाई करने की. है ना? जस्ट ट्राई ट्राई. किया था सर, हम्म. बट